Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing good. And I will start by introducing myself. I'm Saman Majabeen. I'm working as manager marketing at CyMax Technologies. And today we are going to have a wonderful, guest. And he's going to, talk on why most of the AI initiatives fail and how can, we can avoid the pitfalls. So we have today with us Muhammad Ryan Siddiqui. He's the youngest Microsoft developer. So Ryan, moving on to you. Please start by introducing yourself and let us start discussion. For sure, sounds good. Yeah, we can get started. So hello everyone, मेरा नाम रियान सिद्दीकी है. I actually have a slide on introduction, but just as a general overview, I am a software engineer by trade. So I work in software. I've been in the industry for about over 10 years now. I started off with like mobile software, so like Android, iOS. जो आपके phones होते हैं जो आप app इस्तेमाल करते हैं, started creating those. Now I work at Microsoft as a software engineer. We create all the communication software that you use. So actually, like Teams, जिस पे भी webinar हो रहा है, I actually work on that, plus like another AI product. And then outside of that, I run a company called Retech, where we do a lot of like software development work. I'll get into that in other detail, but basically, all in all, I've been in the industry for over 10 years now. I have over 5 world records in the tech world. And today, what I'm going to be talking about, कि आज का जो topic है, which is why AI initiatives fail. We're going to use some examples कि मतलब अभी जो आजकल जो नई technology आ रही है, artificial intelligence and a lot of the new tools that we have available. पहले तो we'll just go over कि ये है क्या, what does like AI actually means, and let me know if everyone can see the slides and everything when I change. So this is the agenda that I want to walk everyone through today. Feel free to, this is open forum. Feel free to like type in any questions in the chat. This is being recorded as well, so people who are watching this later, feel free to reach out on social media अगर आपके पास कोई सवाल है, anything like that. So we're going to be talking about AI है क्या in very simple language, and then what the problem is. So हमारे पास अब एक ये नई capability आ गई है artificial intelligence की that we can now apply in our businesses. Like any type of आप किसी भी scale के business है, you're a solopreneur कि मतलब आप एक one man show हैं, you're creating a product, you're creating a digital service, किस तरह आप AI इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, what are the failures that you see, as well as if you're a medium-sized company like a startup, a boot-started startup, या अगर आप एक medium tier company, even an enterprise. So we're going to look through like some of the examples where how AI agents, AI solutions जो companies ने apply की, how they failed, and what we can learn from them, and then हम इसको किस तरह apply कर सकते हैं within our workforce, like whatever initiative हम लोग जो करना चाह रहे हैं digitally, how to get the most out of it, and then at the end like just some key takeaways and next steps के मतलब okay, अब हमें पता चल गया artificial intelligence क्या है, हमें पता चल गया इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इसको किस तरह नहीं इस्तेमाल करते जो बाकी existing companies हैं उन्होंने किया है, etc. And then we can end off with like a Q&A and discussion. So that's the agenda for today. So we'll get started. Okay, so in terms of again, just general introduction. So my name is Rihan. That's a visual of me. You guys can see me here as well. So I have 5 world records in tech. I'm the current Guinness World Record holder for being the world's youngest software engineer. Microsoft history का आज तक का सबसे youngest software engineer आज तक in history. I'm an international speaker, a mentor. I do a lot of coaching and mentorship related to technology. So like a lot of education in terms of artificial intelligence, business owners के लिए, solo founders के लिए, students के लिए, etc. who want to get into tech and make the most of it. I'm an entrepreneur as well. I'm the founder of Retech, like I mentioned before. हम लोग software solutions बनाते हैं in healthcare and wellness specifically. For example, my company ने जो I'm originally from Canada. I'm based in Canada. तो Canada में एक city है Vancouver, where I grew up. Vancouver के जो भी hospitals हैं, अगर आप उनके emergency rooms में जाएं, मतलब उनके hospitals में जाएं, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है emergency का referral भेजने के लिए. समझे आपका हाथ जला,
आप डॉक्टर के पास गए, you like say you burn your hand, you go to the doctor, you go to the ER, and then the doctor says, okay, no, you need a plastic surgeon. So like they'll send that referral off. वो जो software, like that's something that I've actually built. My company has built, Raytech. So it's actually currently deployed live. It run, like our solutions run in hospitals, and we've worked with physiotherapy clinics. So हमारा main focus area, it's in healthcare and wellness. The other thing, I'm a founder of a TechMass Institution as well, which is an online free initiative. You guys can go to ryansadiki.com. जिसमें ना मैं पढ़ाता हूँ technology and AI and everything के बारे में. And then some like some recognition from world governments, etc., for the effort. So that's enough about me. Let's go on to the topic. Acha, we'll start off with our foundation. हम लोग AI लफ्ज़ हर जगह सुनते हैं, but what exactly is AI? Like we hear these terms, artificial intelligence, what this is. And the way I like to define it right here is that AI is not a robot magic. हमेशा जब आप AI बोलें, लोग अपने दिमाग में या तो उसको चैट जीपीटी समझेंगे कि भाई ये है AI, या उसको समझेंगे ये कोई टर्मिनेटर का रोबोट है, मतलब ये जो आ रहा है एक्सेट्रा. So it's both are examples of it. Artificial intelligence उस चीज़ को कहते हैं basically एक software, like any type of just a digital thing that can recognize a pattern and follow rules. That's what we call artificial intelligence. अब जिस तरह एक इंसान, जब आप बड़े होते हैं, जब आप एक बच्चे होते हैं, आप चीज़ों को किस तरह सीखते हैं. आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं, फिर आपको उसकी फीडबैक मिलती है कि ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है. आग वहाँ पे चूल्हा चल रहा है, like say like your stove is on, and then I like put my hand on it, I'm gonna get burned. So my brain just got a feedback that hey, this is a bad thing. So I just formed a pattern कि hey, जब भी मुझे आग नजर आए, whenever I see fire, like I don't want to put my hand into it. उसमें हाथ नहीं डालना कि आप जल जाएंगे. Same thing like that. Um, that's exactly like इसको कहते हैं natural intelligence. Like that's something that we do naturally. Artificial intelligence क्या होता है कि we like आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आपके पास एक virtual agent, virtual एक digital एक चीज बनी हुई है, like a software, and then वो खुद पैटर्न सीखने बजाय यू टेल इट, यू डिफाइन दोज रूल्स कि आप उसको बताते हैं कि अच्छा भाई ये इन्हें ये चीज़ें आग हैं, इसको हाथ नहीं लगाना, ये पानी है, like try to like इसको टच करो etc. Like basically you define these rules. And artificial intelligence, like examples of it, like we use it in daily in our lives. This is not chat GPT. like ये वो नहीं है कि अब AI आया है, या हमेशा से था. जब आप अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, anytime like you log into your computer, for example, आप अपना iPhone पे अपनी face recognition करते हैं. Like आप YouTube खोलते हैं, Netflix खोलते हैं, you see like all the show recommendations can be especially specifically for you, etc. या आपकी email, for example, आपकी email जब आपको कोई spam message आता है, like if you get a message from someone and it shows up in your spam folder, that is artificial intelligence. That is an example of it, which is So, essentially Ryan, you just mentioned that AI कोई अभी से नहीं है, it is from the start. So, can you please elaborate how come? Because for a person like me from not the tech side, it is not like I'm not getting कि अगर AI था तो वो किस form में था, वो किस तरह से था, so that our audience, is also connecting कि वो किस form yeah में था. no. Yeah, no, that's a very important question. So the question is that the word AI is now everyone's hearing AI. लेकिन जब मतलब if I'm saying that AI शुरू से था, like what's that? What does that mean? AI का मतलब होता है basically recognizing a pattern. एक software अगर एक pattern recognize कर सके, that's what we call like quote unquote intelligence. आप अपनी email इस्तेमाल करें, आपका email में एक spam folder है, वो that's one type of artificial intelligence. अब क्या difference है जो लोग करते हैं कि अब हमारे पास एक चीज़ आ गई है जिसको हम कहते हैं LLMs, like large language models, कि जिसमें अब आपके पास एक इंटरफेस है, एक टेक्स्ट बेस, कि मतलब आप बात कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, जब से चैट जीपीटी आया, जब से भी सबके दिमागों में है कि भी AI आ गया, मतलब AI है, अब AI का ज़माना. तो ये फ़र्क है कि पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो असल मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो हमारे सॉफ्टवेयर में हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है शुरू से. जब आप अपना लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, उसमें मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हुई हुई है, एवरीथिंग. सिर्फ अब फ़र्क ये है कि अब आप मतलब बात इंटरेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के साथ. दैट्स द ओनली डिफरेंस. कि मतलब आजकल like why we say कि AI आ गया, why we say that AI is here. And the thing about like AI software, it works fast, never gets tired. और आपको लगता है like this is also another thing, like technically
इधर मतलब कोई चीज़ नहीं है जिसका दिमाग है, कोई दिमाग नहीं है, like there's no quote unquote intelligence, is just pattern recognition. मैं जिस तरह एक बच्चा सीखता है, वो इनपुट लेता है, अपने दिमाग में देखता है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और उसको ऊपर पैटर्न्स नजर आते हैं कि भाई पहले मैंने ये किया था, तो अब मैं ये करूँगा. That's the same thing. Like there's no quote unquote कोई दिमाग नहीं बैठा हुआ आपके कंप्यूटर में. It's just pattern recognition. So that's AI in very, very simple words, which is that it's not a robot, it's not magic, it's just pattern recognition of software, and it's always been here. Now we're just in a higher order form. मतलब अब हम उस जगह पे आ गए कि where we can interact with it. Yes. Now, okay, so we're gonna walk through this slide what this means. Okay. But basically, according to a really big survey that was done, especially here in North America, there was a survey done of businesses adopting AI, like AI tools. Let's before a slide पे बहुत सारे numbers and things like that है. So let's just backtrack. अब क्या है कि अब आजकल ना ये जो पैटर्न रिकग्निशन की जिसमें मैंने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ना बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों. फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ जिससे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ. आई पोस्ट लाइक से सोशल मीडिया वीडियोस, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस लगाता हूँ. Now I need some type of a software जो ना मेरी वीडियो को ले और उसमें से बैकग्राउंड नॉइज हटा दे, फॉर एग्जांपल. तो अब इसका एक डेडिकेटेड AI टूल आ गया, AI पावर टूल, जो जाएगा मेरी आवाज़ को समझेगा कि मेरी आवाज़ कौन सी है, पीछे की आवाज़ आ रही है, पीछे को हटा देगा और मुझे सिर्फ मेरी दे देगा. लाइक दैट्स वन एग्जांपल ऑफ एन AI टूल स्पेसिफिकली फॉर रिमूविंग बैकग्राउंड नॉइज. या अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग का बैनर बनाना है, तो मैं जाऊँगा कैनवा पे AI है, मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा, वो जनरेट समथिंग. सो दैट्स एन AI टूल फॉर ग्राफिक जनरेशन. उसी तरह देयर इज AI टूल्स अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीथिंग. इमेजिन करें आप एक बिजनेस है, आप एक कार डीलरशिप है, एक गाड़ी के डीलरशिप है, एंड यू हैव लाइक डिफरेंट, एक कार डीलरशिप में क्या होता है, आपके पास अलग अलग सेल्स एजेंट्स होते हैं. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आज इस महीने आपने इतनी गाड़ियाँ बेचनी है. लाइक यूर सेल्स एजेंट एट ए कार डीलरशिप, आपको यू हैव टू सेल लाइक से 10 कार्स एवरी मंथ. तो अब उनका क्या क्या काम होते हैं, जैसे कोई फेसबुक पे ऐड लगाना किसी चीज़ के लिए, लोगों को कॉल करना, फॉलो अप करना. अगर लोग उनको कॉल करें वो फिर जवाब देते हैं कि हेलो यस हमारे पास गाड़ी स्टॉक में है, इस रंग में है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आते हैं. अब इस चीज़ के लिए सिर्फ इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए अब AI टूल्स आ गए हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक AI रिसेप्शनिस्ट सेटअप करते हैं अपने बिजनेस के लिए. मैं एज अ कस्टमर मैं कॉल करूँ आपके बिजनेस पे, एक AI एजेंट उठाएगा. उसका फ़ायदा ये है कि वो कभी भी उठा सकता है, मतलब ये नहीं है एक इंसान की तरह कि मतलब वो रात के वक्त सो रहा होगा सुबह के उठा होगा. उसके अंदर पहले से प्री प्रोग्रामिंग होगी कि किस सवाल का क्या जवाब देना है. कोई भी जुबान बोल सकता है. AI रिसेप्शन ये एक चीज़ है एक्चुअली जो मेरी कंपनी रेटेक हम लोग भी बनाते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ AI रिसेप्शनिस्ट फॉर क्लिनिक्स. उसमें यह है कि कोई भी आप जुबान से बोलें उसको समझ आ जाएगी आपको अपनी बुकिंग कैंसिल करनी है. जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लिनिक में एक रिसेप्शनिस्ट होती है, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव ए रिसेप्शनिस्ट एट ए क्लिनिक. This can be used at any clinic, or is it limited to medical clinics only? Yeah, anything. Yeah, it can be used for like anything that has anything to do with bookings. जिसमें आप ना एक booking calendar manage कर रहे हो, तो वो dental clinic हो गया आपका, like just anything. एक ऑटो शॉप होगी, ऑटो मैकेनिक्स के वो अपना टाइम स्केड्यूल कर रहे हैं कि भाई कब गाड़ी आए एक्सेट्रा. द एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गिव इज दैट कि हर एक ना यूज केस के लिए अब हमारे पास टूल्स आ गए हैं, AI पावर्ड टूल्स. मतलब सॉफ्टवेयर आ गया कि उस चीज़ को मेरा एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर जो मेरे वो मसले हल कर देगा. मुझे कोई चीज़ चाहिए जो 100 लोगों को कॉल करे, आई हैव दैट. अब मैं एक सॉफ्टवेयर से कर सकता हूँ. मुझे कोई चीज़ चाहिए जो 100 लोगों की कॉल उठाए और उनको जवाब दे, मतलब जैसे एक रिसेप्शनिस्ट होती है, आई कैन डू दैट. मुझे एक चीज़ चाहिए जो मेरी वीडियो एडिटिंग कर ले या मेरी मदद कर दे मेरी वीडियो एनहांस करने में, आई हैव दैट, मतलब जनरेटिव AI एक्सेट्रा. सो दिस इज a graph from a recent survey that was done out of some of the biggest companies in the world on their adoption for AI. कि मैं एज अ बिजनेस ओनर, अब जितना आपका बिजनेस बड़ा होता रहता है, आपके जो टास्क किए जाते हैं इंटरनली वो बढ़ते रहते हैं. आपकी कम्युनिकेशन हो गई, स्टेटस अपडेट्स, आपकी सोशल मीडिया टीम है, you have your marketing side, sales side, your product development, whatever जो भी आपकी company है, whatever your company is. And according to that, a lot of the AI adoption a lot of the tools that companies use within their organizations, those actually never reach production.
So about 42% of companies abandoned AI projects in last year, in 2025, and this is way more than 2024. What this means basically कि भाई मैं एक कंपनी हूँ, मेरे मेरे Okay. टीम में 50 लोग हैं. अब मैंने इस्तेमाल किया कि भाई अच्छा अब हम 50 लोग हैं, हम लोग ना ABCD मतलब ये 4 काम करते हैं. अब इसमें किस तरह AI हमारी तेजी से मदद करता है इनको करने में. अब सॉफ्टवेयर तो हैं आपके पास जो And आपको how मदद much कर. time does it take to basically program and to train a bot जो भी हम AI के लिए यूज कर रहे हैं, जिस तरह आपने रिसेप्शन के लिए बताया है? It depends on your use case, but not a lot. Like, क्योंकि a lot of these ये जो AI tools हैं, जैसे receptionist के लिए एक AI receptionist हो गई, या एक AI वो आपका हो गया, email भेजने वाला agent हो गया, etc. या आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपका एक AI एजेंट है जो फ़ोन मतलब उठाता है कॉल, अगर किसी का इंश्योरेंस क्लेम है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, खुदा ना खास्ता, लाइक फॉर एग्जांपल अ कार एक्सीडेंट, तो वो आपका आप कॉल करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, वो उठाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, आपका मॉडल नंबर, एवरीथिंग, लाइक ऑल दैट. इसमें ये क्या होता है कि आप वन टाइम इसको बनाते हैं एज अ डेवलपर, and then फिर सबके लिए आप customize इसको कर सकते हैं. So maybe we're talking like maybe a couple of days or like to actually deploy. And that's the thing I'm getting into, which is a lot of these AI adoptions that companies ने किया. Like for example, 85% of some of the biggest companies in North America, their AI projects fail because of poor data quality. कि मतलब आपके पास AI receptionist तो है, लेकिन अब मेरे पास अच्छा डेटा नहीं है उसको देने के लिए कि अगर बंदा ये पूछे तो क्या बोलना है, ये पूछे तो क्या बोलना है. मतलब मेरे पास वो फुल कॉन्टेक्स्ट, वो फुल डेटा नहीं है फॉर माय बिजनेस. या वो है लेकिन बुरा है. अगर फॉर एग्जांपल मैंने कॉल किया, आप एक स्किन डर्मेटोलॉजी क्लिनिक है, मैंने आपको कॉल की, आपका AI उठाता है रिसेप्शनिस्ट की बजाय, मतलब आपकी AI वर्चुअल असिस्टेंट उठाती है. अब मैं आपसे सवाल पूछना शुरू कर दूं कि अच्छा भाई मेरी स्किन में ये मुझे मसला आता है, अब मैं क्या करूं. अब अगर आपके AI को पता नहीं है क्या जवाब देना है, अगर आप उसको बताते नहीं है, वो कुछ एज सच जवाब नहीं दे पाएगा. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय लाइक poor data quality and everything. um, so this is the graph. This is just to show that businesses जब AI adopt करने की कोशिश करते हैं अपने workflows में, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं छोटे मोटे, अगर वो AI के थ्रू करवा लें, a lot of them fail. So it's not like कि मतलब मेरी एक organization है, I'm a founder, and I'm trying to use AI to help me in something, like it's most likely going to fail. So what I wanted to establish here is that there, like AI adoption, there is failure. Why is that? Let's get into that. कि मतलब ये क्यों आपके AI Because of projects the fail data, होते poor data quality, as you have just हैं? Yeah, mentioned in the slide as well. All right. So how can we rely on the data? With this, I have this question that how can we rely on the data? वो कौन से sources हैं जिससे basically हम data ले रहे हैं, और how can we make sure कि हमारी जो quality है data की, it's good. Yes, that is an important question. We'll save that. अभी हम इस सवाल को बचाते हैं. We'll come back to it. Yeah, I have a slide for that, so we can look into that one. Okay, so बहुत सारा text है इधर. Let's go through it one by one. Yeah. अब हम examples देखेंगे कि बहुत सारी जी. companies, and we're going to talk about really big companies. Like we're going to talk about like international organization, like corporations. उनके लेवल पे artificial intelligence adoption fail हो रही है, तो small businesses के लिए भी छोटे छोटे scenarios में हो रही है. So for example, एयर कैनेडा, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में हमारी जो नेशनल एयरलाइंस है एयर कैनेडा, अब एयर कैनेडा ने ना अपनी वेबसाइट पे एक चैट बॉट इम्प्लीमेंट किया कि भाई आप उनकी ऐप डाउनलोड करें, उनकी वेबसाइट पे यू कैन ना इंटरैक्ट विद देयर वर्चुअल सर्विस, कि मेरी फ़्लाइट डिले हो गई, मुझे कुछ सवाल पूछना है, कि भाई कितना मुझे केजी अलाउड है, मैं कितने बैग लेके जा सकता हूँ, ये फ़्लाइट कब होगी, मेरी कैंसिल हो गई, तो भाई अब मेरी अगली कब है, एक्सेट्रा. आप इमेजिन कर सकते हैं फॉर लाइक एविएशन, ये जहाज़ वगैरह के लिए कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर सर्विस को डिपेंड करना होता है. तो मी एज अ बिजनेस, फर्स्ट करें मैं एयर कैनेडा का CEO हूँ. अब मैं देखता हूँ कि भाई हम लोग हर साल 80 मिलियन खर्च कर रहे हैं, ये इतना कर नहीं रहे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. हम हर साल $80 मिलियन खर्च कर रहे हैं अपनी कस्टमर सपोर्ट के लिए, कि भाई हमारे 1000 लोग हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए. आप किसी को मदद चाहिए होती है अपनी टिकट बुकिंग करते हुए, बुकिंग को कैंसिल करने के लिए, अपने फ्लाइट का स्टेटस चेंज करने के लिए, कुछ कैंसिल हो गया. अभी कनाडा में इधर अमेरिका कनाडा में भी विंटर स्टॉर्म आया हुआ है, तो उसकी वजह से 15,000 फ्लाइटें सिर्फ अभी पिछले 3 दिन में कैंसिल हुई हैं. अब वो जो फ्लाइटों के लोग हैं उनकी रीस्केड्यूलिंग करना, एवरीथिंग, ये सब कस्टमर सपोर्ट का काम आता है. अब ये एक परफेक्ट एरिया है AI को बीच में लाने के लिए कि जो छोटे छोटे यहाँ पे काम है हम उसको और तेज कर सकें,
क्योंकि मी एज अ बिजनेस ओनर मेरा क्या फोकस है, और ये किसी भी स्केल पे, लाइक इफ आई एम अ बिजनेस ओनर ऑफ अ रियली बिग लाइक international company like Air Canada, yeah, even if I'm a business owner of a small company जिसमें 5 लोग 10 लोग हों, for example, मेरा मेन मकसद ये है कि भाई मुझे अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है, और जो मैं अपना एक्सपेंडिचर है, मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो कम से कम हो। ये दो मेरे गोल्स होते हैं एज अ सीईओ, एज अ बिजनेस ओनर। तो एयर कैनेडा ने क्या किया, सो दे इम्प्लीमेंटेड दिस चैटबॉट जिसपे दे एडेड some ability for customers to interact with it, कि जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी फ्लाइट डिले हो, आपके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल पैसे मिलते हैं अगर आपकी फ्लाइट ना बहुत ज़्यादा देर डिले हो जाए कनाडा में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेदर के अलावा किसी अगर मैकेनिकल वजह से आपकी फ्लाइट डिले होती है कि भी जहाज़ ख़राब था, एयरलाइंस इस तरह में लोगों को बिठा नहीं सकती, तो कनाडा में आप अप्लाई करते हैं फॉर कॉम्पनसेशंस। सो समवन डिड दैट, लाइक अपने चैटबॉट से बात की कि my flight got delayed, etc. I like need this type of fee or this type of compensation in return. Chatbot ने कहा कि हाँ, you'll get this that. जब बंदे ने उसको actually उनकी स्टेटमेंट को यूज़ करने की कोशिश की कि भाई अच्छा इन्होंने इनके बॉट ने बताया कि भाई मुझे इतने इतने पैसे मिल सकते हैं वापस, इतना हो सकता है, लेकिन फिर एयर कैनेडा ने स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर ली कि नहीं, हमारी पॉलिसी के मुताबिक नहीं मिल सकता। लेकिन अब उनका ऑफिशियल एक रिप्रेजेंटेटिव आपको कह रहा है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में वो बैक ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन देयर, मतलब एक मिसमैच है बिटवीन व्हाट देयर चैटबॉट इज रिप्रेजेंटिंग, मतलब और या असल में जो उनकी पॉलिसीज हैं। And then there was a really big court case as well, where the company was actually held liable, so they had to pay out a customer. I can't remember the exact scenario, मतलब हुआ क्या था in this case, but this is a very famous story. I have a link to the actual story as well, जिसमें कस्टमर का इशू हुआ था, उनके चैटबॉट ने उनको बहुत गलत गाइडेंस दी, totally different to company policy, and then they were actually held liable. क्योंकि imagine करें मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट से बात कर रहा हूँ, अब वो जो एजेंट है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो वो एजेंट कहेगा इसका मतलब कंपनी वही चीज़ कह रही है। So this is an example of like where your agent training, agent optimization आपके डेटा वगैरह काम आता है। Another really big example is Chevrolet, one of the biggest car manufacturers पूरी दुनिया में। Chevrolet हर कार ब्रांड की तरह आपका मॉडल किस तरह चलता है, आपकी गाड़ी की कंपनी है, आप लोग गाड़ियां बनाते हैं, Chevrolet हो गया, Ford, Toyota, फिर आप लोग ना अलग अलग डीलरशिप्स को अपना इन्वेंटरी बेचते हैं, मतलब यू सेल लाइक से कोई इस्लामाबाद में डीलरशिप है, I'll like sell them, like say there's a dealership in Islamabad, उनको मैं भी 5,000 Chevrolets की गाड़ियां दे रहा हूँ, so they can like sell those units। उसी तरह कनाडा में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड देन वो अब उन डीलरशिप्स का काम है, so now it's up to those dealerships कि अब वो किस तरह इसको बेचेंगे। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था कार डीलरशिप का अर्लियर कि उसमें चैट बॉट्स होते हैं, तो एक बहुत फेमस कार डीलरशिप थी हियर इन नॉर्थ अमेरिका, एक्चुअली आई हैव अ लिंक टू दैट एज वेल, वेयर ना दे इम्प्लीमेंटेड ए एआई चैट बॉट टू हेल्प पीपल क्लोज देयर सेल्स। और ना एक डीलरशिप ने कहा, एक शेवलर की डीलरशिप ने, कि ऑफिशियल जो उनकी डीलरशिप है कि भी चलो हम ना एक ये जो सेल्स के हमने बंदे रखे हैं, इसके साथ साथ ना एआई भी रखते हैं जिस तरह लोगों से बातचीत करे, उनसे ये जो उनकी लीज एग्रीमेंट्स वगैरह है उसमें मदद कर दे साइन करने में, उनसे सवाल जवाब पूछ ले एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे किसी ने ना पता लगाया कि उनका जो चैट बॉट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, आप ना उससे एक्चुअल कार की लीज एग्रीमेंट्स यू कैन साइन, और उसकी उनके चैट बॉट ने गलती की कि कोई ना एक नई एसयूवी खरीदना चाह रहा था शेवरलेट की, एंड दिस इज एन एक्चुअल थिंग, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस नॉट अ स्टोरी, दिस एक्चुअली हैपेंड, where the chatbot actually closed the contract for $1, and because आप फर्ज करें like आपकी हजारों करोड़ों की गाड़ी, और I don't know whatever the price is, like लाखों की गाड़ी, चैटबॉट से इंटरेक्ट करते हुए बंदे ने उसको ऐसे एक एरिया में ले आया where उसको पता नहीं था कि अब मुझे क्या करना है, so it just kind of like just created a contract for 1 hour, and then the contract was created, was binded, and then the company was actually held liable कि मतलब जो contract execute हुआ, उस बंदे को कॉल आ गई अगले दिन कि भाई हेलो, ये हमसे गलती हो गई थी, मतलब ये असल में आपकी गाड़ी नहीं हुई, $1 की आपने गाड़ी नहीं ली, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे पास देखें आपके बॉट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, साइन द लीज एग्रीमेंट एज वेल। सो दैट्स लाइक वन एग्जांपल कि जहाँ पे डीलरशिप ने बहुत एक चीज़ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की विद एआई एंड इट जस्ट आउटराइट फेल्ड, where आपने essentially आपके AI ने गाड़ी बेच दी $1 की। क्यों? क्योंकि आपके पास सेफ गार्ड्स नहीं थे। Like me as a business owner,
I didn't optimize my AI properly. And we're gonna get into how to like actually do that. किस तरह आप AI इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या है कि जब मैं कहता हूँ कि AI इस्तेमाल करना business में, we're gonna get to those bits. But right now I'm just giving like just examples, मतलब crazy examples of stuff that's happening with AI adoption. Ek actually that's very close to me personally, which is number 4. We'll come back to the McDonald's. Actually, let's do the McDonald's one first. McDonald's, what they did was they implemented AI drive-through. So McDonald's का क्या है कि ना अब मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, but Canada, America में, like within North America where I'm at, यहाँ पे ना McDonald's drive-throughs are open 24/7. McDonald's पे अभी भी जा सकते हैं उनके drive-through पे. The main restaurant closes, but the drive-through is open, so you can actually go in, drive your car, you यहाँ can पर भी order I think something. open होते हैं 24 hours. So that's worldwide, right? So McDonald's ने क्या किया कि they implemented an AI ordering system. So there was one branch of McDonald's that did that, and I'll show the link here. It's a very funny story. कि आप गाड़ी अपनी लेके आए तो एक इंसान आपसे पूछता है स्पीकर में, जो उनकी मेन्यू नजर आ रही थी कि भाई आपको क्या चाहिए आज, like what do you want? तो उन्होंने ना AI इम्प्लीमेंट किया कि भाई चलो एक बंदे को हम यहाँ बिठाने के बजाय कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप पूछते रहें, वो आप जो भी उसको बताएंगे, whatever you tell your order, it'll detect it and then it will store it कि भाई अच्छा भाई आपको इतने फलाना बर्गर चाहिए, whatever etc. तो उनका एक AI था जो 3 साल तक इतनी गलतियां करता रहा. किसी ने एक टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी, उन्होंने उनसे एक चिकन नगेट्स का बॉक्स मांगा, like a dozen chicken nuggets. वो उनके ऑर्डर में ऐड करता रहा, मतलब 200 chicken nuggets, 300 chicken nuggets, etc. So that was a video that really went viral. So that's like another really like silly example of how like a small thing where you try to add an AI tool कि आपकी चलो भी मदद करे ordering लेने में, drive-thrus में, kind of just backfired. Acha, this one is very important to me personally, the 4th one. QQ, this actually happened on Teams. So as part of Microsoft, I work on the communication side of things. So our organization is responsible for like creating everything communication. So we own the communication infrastructure at Microsoft. तो जो Skype है आपका, Xbox के अंदर communication होती है, LinkedIn पे जो आप messages भेजते हैं एक दूसरे को, आपका Teams हो गया, like all the calls जो Teams के ऊपर होती हैं पूरी दुनिया में, हर organization, a lot of the organizations in the world use Teams. Governments Teams इस्तेमाल करती हैं अपनी communication के लिए, उनका एक अलग special version होता है Teams का, वो public Teams इस्तेमाल नहीं करते. So they use like special government teams. Like for example, हमारा सबसे बड़ा customer है US government. अब US government में CIA है, like the CIA uses Microsoft Teams to communicate. उनका एक अलग version है. And likewise, like organizations, they have their own Teams deployment. जिस तरह हम अभी एक है Teams interface में. तो यूरोप में एक बैंक था, and I won't name the bank, but the story is in the link right here, where उनकी ना एक finance meeting थी कि उनके CEO की और जो उनकी finance team है उनके साथ, like a sync up, मतलब regular sync up नहीं होता, CEOs check करते हैं कि भाई हमारे targets on point लग रहे हैं नहीं, like what's our revenue, etc. stuff like that. In that meeting, CEO अपने कंप्यूटर पे तो मीटिंग में है, लेकिन जो मीटिंग में बाकी लोग हैं उनको CEO नजर नहीं आ रहा. एक और थर्ड पार्टी उनका कंप्यूटर हैक करके उनकी मीटिंग एक फेक AI बॉट से ज्वाइन करवाई, जिसमें जो बाकी लोग हैं उनको एक जनरेटेड वीडियो नजर आ रही है CEO की, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक जिस तरह भी आपको मेरी आवाज आ रही है, you guys can like hear me and see me. There was a use case where this all was AI generated. मतलब मेरी video was AI generated and my आवाज, मेरी जो आवाज है was synthetically generated. And this bot, like this hacker, whoever this malicious bad actor was, they were able to get access to data within the company for their financial records and managed to get up to $25 million within a couple minutes from that bank. एक CEO बनते हुए, मतलब नकल करते हुए CEO की एक AI ने. That's one example. This is actually a counter example कि मतलब how AI is used or like can be used for bad stuff. For example, where मतलब कि आपकी सफर्स करें मैं मीटिंग में हूँ 5 लोगों के साथ, and this is an actual thing, like this is not a joke. मैं एक मीटिंग में हूँ 5 लोगों के साथ, मैं समझ रहा हूँ मैं अपने कैमरे में यहाँ पे बोल रहा हूँ, बट जो बाकी 4 लोग हैं उनको एक AI नजर आ रहा है, मतलब जो मेरे behalf पे बोल रहा है, वो कुछ भी बोलता रहे, जो भी उसके पीछे है, etc. So that's like another very crazy example of like how an AI like disrupted a business. And this actually happened on Microsoft Teams. और अब actually अब Microsoft में like we have अब हम एक नई टीम शुरू कर रहे हैं Teams के अंदर
कि जब डिटेक्ट करेगा कि भाई ये जो फलानी वीडियो और आवाज़ आ रही है ये असल इंसान की है या is this synthetically generated. So that's one. So this is just an example of like just some different examples. Like we can see like different failures within their different steps of their AI implementation. Okay, different अलग अलग companies in Air Canada, Chevrolet, McDonald's. The bank one doesn't really apply, but it's just like a fun one. तो मैंने यहाँ पे डाल दिया. But like Air Canada, Chevrolet, McDonald's, and these are like some of the biggest corporations in ever in existence, like in the world. इनके लेवल पे AI adoption fail हो रही है, तो छोटे levels पे तो होती ही होती है. Now we'll talk. So this was to establish. So slide 1 we established to be okay. अब AI क्या है, हमारे पास भी tools आ गए हैं for specific scenarios जो हमारी मदद करता है छोटी छोटी चीज़ें करने में, वीडियो बनाने में, आप email generate करने में, content planning में, etc. फिर second stage है कि अब चलो हमारे पास, अब हम ये ताकत आ गई हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें करने की. अब जो businesses इसको कोशिश कर रही हैं इसको use करने की, it's not working right for most of the businesses. It's not working right. And then this slide we kind of established कि like some of the extreme end scenarios कि भाई सबसे बड़े scale पे क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं अगर आपकी AI adoption proper ना हो. कि आप एक गाड़ी बेच सकते हैं $1 की, आपके बैंक के 25 मिलियन जा सकते हैं, या आप एक बड़ा सा लॉ सूट हार सकते हैं क्योंकि आपके जो एयरलाइंस का बॉट है उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी. Now we're going to talk about some of the good stuff, how these AI can actually help. I'm going to pause here if anyone has any questions or comments. अगर कोई सवाल जवाब हो, and then I can. Okay. Anyone with any questions, comments, anything? Yeah. So, hello, Rehan. I mean, it's great to have you on board. Can you hear me? Yeah, I can hear you all clear. Yeah. Okay, lovely, lovely. So, you shared some of the pitfalls of using AI. I mean, where you quoted incidents of tech going wrong. I'm sure there are strategies where learning from these mistakes or bugs, many IT companies would have, taken some measures to mitigate these issues that can arise. So could you share those as well, or if they're coming in your later slides, we could discuss them there. Yeah, no, that's a really good question. It's like we do have these failures, but now what can we do against them as a countermeasure? But yeah, that'll be coming up. But that's a very good question. So we'll save that towards the later side. Yeah. Thank you. Sounds good. So I guess So to answer that, so we'll have the answer soon to that question. Is like what are some of the things that we can do? These examples, ये जो examples से, these are like the extreme end, like the biggest corporation in the world. And then if you go down the spectrum, आपकी ये चीज़ है कि मैंने AI agent use किया अपने clinic में, वो आज की बजाय कल की appointment book कर रहा है. Like just simple mistakes. मैंने उसका नाम बताया, मैंने call की, like say for example I run like a consulting firm. मैंने एक Facebook ad run किया, and then I get like lead intakes कि लोग अपना interest दिखाएं for like my consultancy services. मैं रियान सिद्दीकी हूँ, मैं आपको देता हूँ tech और like आपके software consultancy. तो आपने मेरा ऐड देखा फेसबुक पे, आप उसको दबाते हैं, मेरी वेबसाइट पे आते हैं, अपनी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि भाई ये मेरा नाम है, ये मैं बनाना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे टेक्निकल कंसल्टेंसी की ज़रूरत है. आप उस पर सेंड दबाते हैं, वो मेरे सिस्टम में आ जाता है आपका डेटा एज अ पोटेंशियल लीड और एज अ लीड. And then मैंने एक AI bot setup किया हुआ है that like will call you like soon as you fill the form, will call you just to get more information, learn about you, your company, etc. अब मेरा एजेंट आप उसको बताते हैं कि हाय माय नेम इज रियान, वो गलत नाम पिकअप कर रहा है, like even small things like that. So it's across the spectrum from like very very small scenarios, me as a solo founder, all the way to the biggest corporations where we're seeing a lot of these mistakes. And to answer your question, what we can do to mitigate those, that's will be coming up. But before that, what I wanted to talk about is how AI agents actually help you. तो बार बार आपने मुझे भी सुना होगा, like I'm saying one thing कि businesses AI use करना, what does that even mean exactly? मतलब इसका मतलब क्या है? So a lot of these new tools that we have access to that are created for specific use cases. कि मतलब for example, मेरे पास अब tools आ गए हैं to create videos that like specialize in just video generation, or I have tools that specialize in like say content planning. Yeah, I have like receptionist AI tools कि मतलब मैं उनको deploy कर सकता हूँ अपने business के reception as a virtual receptionist. मेरा एक number है,
मैं जो भी प्रोवाइडर है मेरा उनसे वो एक अपना रिसेप्शनिस्ट प्रोविजन करूँगा, अपना नंबर कनेक्ट किया, अब क्या होगा अगली दफ़ा कोई भी उस नंबर पे डायल करेगा वो बॉट एंगेज हो जाएगा बैकग्राउंड में. So there's a lot of use cases for stuff like that. Before I answer that, there's a question in the chat. I'll answer that Yes, first. we have a question from Mohammed Mohsin, and he's asking why do you think that so many of AI tech companies and startups show strong demos but weak revenue traction? So yeah, very good Yeah, no, question. that's a very good Very question. And relevant. well, yeah. So basically, the question is कि मतलब कि a lot of the new like a lot of startups, a lot of companies, they showcase a lot of capability कि भाई देखो हम AI इस्तेमाल करें इन चीज़ों के लिए, but that doesn't really work. Like it just kind of fails. Like for example, मुझे एक याद है there was an AI company that created जैसा आपकी like say हम सबके पास गाड़ियाँ होती हैं. गाड़ियों में आपकी ओनर मैनुअल होती है फॉर एग्जांपल लाइक स्टफ यू सी अबाउट द कार कि मतलब उसकी मैन्युफैक्चर डेट क्या थी उसमें मतलब not the date but like all like engineering information जो आपकी गाड़ी के अंदर आपकी manufacturing book होती है. So I remember initially when like GPT came out, these language models, a company थी that created a wrapper on top of GPT. मतलब जिसमें क्या होता है कि भाई आप उनकी वेबसाइट खोलें अपनी गाड़ी का मॉडल लिखें तो आपको फर्ज करें कोई चीज़ पता लगानी है अपनी गाड़ी के बारे में कि इसका ये यूनिट के साथ चलता है लाइक एयर कंडीशनिंग का या इसका तो आप अपनी इंस्ट्रक्टर मैनुअल पढ़ने के बजाय ढूंढने के बजाय आप उस AI चैटबॉट को खोलें उसमें अपना मॉडल लिखें लाइक ये मेरी गाड़ी है अब आप डायरेक्टली उससे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इंग्लिश में उर्दू में लाइक इन प्लेन लैंग्वेज लाइक हे मुझे बताओ इस गाड़ी के बारे में ये फलाना सिस्टम क्या था फिर वो AI चैटबॉट आपके बिहाफ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ेगा और आपको extract करके दे देगा information. Sounds pretty useful for people. So this is like an example of like AI being used, but it didn't really work. Like as you said, जैसे आपने सवाल में पूछा कि मतलब आप ना ये इस टाइप के सॉफ्टवेयर चले like the wrappers that are built on top of GPTs, like sorry on top of language models. So there are like companies that जिसमें they show a lot of capability, but it actually doesn't really solve a problem. And I have a slide on top of that as well. And why, to answer your question, आपका जवाब देने के लिए, I have, I think, towards the end, but we'll come to that, is, yeah, right here. Companies ना लोग especially हमारी एक tendency है like we're ना very trend oriented कि भाई जो चल रहा है हमने उसको follow करना है. मतलब if you're a CEO और आपके business सही चल रहा है और आपको पता नहीं है कि AI को कहाँ फिट करना है लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भी AI आया है तो कहीं ना कहीं AI इंटीग्रेट करो उसमें आपको पता नहीं इसका मतलब क्या है लाइक बट इस टाइप की जो उसकी चीजें प्रैक्टिकलिटी क्या है say ये भी that मैटर again, करता है ना sorry फिर से पूछो. आई एम सेइंग कि ये भी मैटर करता है ना कि उसकी ये भी तो देखिए उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है. Yes, exactly, right? So it's like आप एक चीज करना चाह रहे हैं सिर्फ इसके लिए कि वो हर कोई वो कर रहा है. Like there's Just not for the really sake of practicality. yes, Yeah, doing and it. that's why a lot of new companies, a lot of startups fail very quickly because they're trying to do something that's like just वो एक मसला हल करना चाह रहे हैं, that's not really a problem. मतलब अब जो भी वो चीज करना चाह रहे हैं बस क्या है कि हम AI के थ्रू करें. Like इसका कोई मतलब नहीं है. That's why they have weak revenue. They burn out fast, very low investor confidence, etc. So that was a fun question. And yeah, we'll open to more questions towards the end. But just to go through this, is that what AI agents are and how they can simplify work. AI agents क्या चीज़ है? अच्छा, एक अब आपके AI tools हैं जो ना कोई एक चीज़ आपके लिए करता है. जैसे हमने नहीं कहा था कि content generation. So like you have an AI tool for content generation. You have an AI tool for email creation. आपके लिए email staff कर दे, आपके लिए calls pick up कर ले, भेज दे. So that's what we call an AI tool. Here there's an AI agent that's a collection of tools. कि मतलब जिसमें एक quote unquote agent एक arbitrary entity है. Agent उसको कहते हैं कि जो ना एक से ज़्यादा आपके लिए काम कर सके. तो for example मैं एक हूँ अगेन मैं एक कार डीलरशिप चलाता हूँ तो मेरे सेल्स की टीम है मार्केटिंग टीम है एक्सेट्रा और लाइक सेल्स के बंदे हैं दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केटिंग जिस मतलब गाड़ियों को बेचने के लिए दे रिस्पॉन्सिबल अब उनका काम है कि भाई जो आवाम है लाइक द जनरल पीपल उनको भी बताना है कोई नई गाड़ी आई है लाइक टोयोटा लॉन्च देयर न्यू लाइक सियाना 2027 तो अब लोगों को किस तरह बताया जाए. अच्छा वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाएंगे उसके बारे में फेसबुक पे एड्स रन करेंगे फिर उसके बाद एड्स पे लोग अपना इंटरेस्ट लिख सकते हैं कि ही लाइक व्हाट्स योर नेम आर यू इंटरेस्टेड एक्सेट्रा. हर एक की डीलरशिप का अपना अलग तरीका होता है टू सेल देयर कार.
अब मैं यहाँ पे एक AI एजेंट इस्तेमाल करना चाहूँगा। AI एजेंट क्या होता है? अगेन जो एक तो आपका AI टूल होता है, लाइक अ सॉफ्टवेयर दैट डज वन थिंग. An agent is something is a collection of those tools कि मतलब that can do multiple things. So AI इस context में क्या होगा? An AI agent is context में क्या होगा? AI agent is something that's it's not just automating a task कि मेरी आपको कोई कॉल करे तो फोन उठाए, like it's not that bit. अगर कोई कॉल करे फोन उठाए, आपको अपना नंबर दे और कहे कि हे मैं ये गाड़ी आके देखना चाहूंगा, तो आपका AI अगर आपके बुकिंग सिस्टम में जाके कैन क्रिएट अ कैलेंडर इवेंट, फिर आपसे पूछेगा आपका नाम, ईमेल कि भी अच्छा आप चलो कल अवेलेबल हैं सैटरडे को एट लाइक से 5 PM गाड़ी को शोकेस करने के लिए, सॉरी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए आने के लिए. If it can do all of that, that's what we call an AI agent. It's more than automation. It's something that can perceive an environment, make some decisions, quote unquote. Again, हमने कहा था कि AI सोच नहीं सकता, but it's just pattern recognition. And it can take action towards a goal without constant human direction. इसको हम कहते हैं AI agents. कि मतलब एक चीज़ जो एक और लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, which is like very famous nowadays, which is agentic. Like agentic coding हो गई, vibe coding आजकल बहुत famous चल रहा है लफ्ज़. इन सब का ही मतलब है कि basically आपके पास AI tools हैं, ढेर सारे tools जो बगैर आपको इनिशिएट किए खुद एग्जीक्यूट हो सकते हैं. मतलब एक टूल रन हुआ, वो एक को ट्रिगर करेगा, वो एक को ट्रिगर करेगा, एक्सेट्रा. तो मेरी डीलरशिप में मुझे टेस्ट ड्राइव्स बुक करनी है, क्लिनिक में अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है, ऑल ऑफ दैट, उस सबको ना 3-4 स्टेप्स, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. कोई आपको कॉल करता है, आपका क्लिनिक पहले तो आपका बॉट उसकी कॉल उठाएगा, देन आप उनके सवाल जवाब पूछेगा, आपके बुकिंग प्लेटफॉर्म में बुकिंग डालेगा, उनको कॉन्फर्मेशन भेजेगा, एक्सेट्रा. सो इट्स अ मल्टी स्टेप थिंग. That's where an agent comes in. And the biggest use case for AI agents is in customer service. आपकी for example, like I said, airlines का सबसे बड़ा use case है customer service का, right? So like for example, Air India, they've implemented a lot of customer service agents, and with a recent survey that happened of Air India, and I have the link to the survey if anyone wants to read more about it. Air India, 97% of all of their customer service queries now handled by AI. So वहाँ मैं Air India के so and this is a staggering, this is a very successful use case of like how a global organization is like effectively cutting down their operating costs. Air India पहले मेरे 10,000 customer support agent थे जो आपकी टिकट से लेके आपकी रीस्केड्यूलिंग, फ्लाइट डिलेज, कैंसिलेशन, उन सब में आपका मदद करते थे. क्योंकि अब मैंने बुक किया है टिकट, कोई मसला हो गया, अब मैं किसी से तो बात करनी है ना उसको रिजॉल्व करने के लिए. They've implemented AI, like a lot of these AI agents that can take decisions, and then now they've cut down like hundreds of millions of dollars in their, not hundreds of millions, like tens of millions of dollars in their customer service cost. यही चीज़, for example, as an example, like हमारी डेली लाइफ में, like आपके आईफोन में सीरी होती है, आपके पास मे बी Amazon Alexa हो घर में, आप उसको वॉइस कमांड भेज सकते हैं. मैं सीरी को कहता हूँ कि हे सीरी मुझे इसको डायल कर दो, तो मतलब सीरी मेरी बात भी सुनती है, उसको वो भी करती है, कॉल भी कर सकती है, मैं मैसेजेस लिख सकता हूँ, एक्सेट्रा. So a lot of like this is what we call an AI agent, which is like doing multiple of those tasks in a chain. For example, over half of the companies, and this was according to a new survey that was done from some of the top AI companies, that over half of existing corporations, they expect to use AI agents and to have their like at least a quarter to half of their workloads be automated. Okay, for example, again, मतलब आपकी customer service में सबसे बड़ा इसका use case है. For example, आप एक insurance company है, right? A car insurance company. अब insurance company को कितने लोगों की कॉलें आती हैं, and it's very complicated calls. कि मतलब मेरा खुदा न खास्ता, like for example, car accident हुआ या कोई natural disaster हुआ, ओले पड़ गए, बारिश हो गई, तूफान आ गया, and like something happened, and I want to now file an insurance claim. I'll like call up their agent. मैं उसको वो मेरी information पूछेगा, like my policy number, फिर मैं उसको पूरा अपना scenario बताऊंगा कि भाई ये हुआ. This is a use case where we can use AI agents. कि हम AI agents deploy कर सकते हैं. एक recent example that I was looking into with someone that I met, वो ना एक कंपनी चला रहे हैं जो जिसमें आपकी फसलें नहीं होती, like farms. So they created an AI agent
that helps farm insurers do analysis on farming insurance claims. कि मेरी मतलब फसलें हैं, मेरी फार्म है, आई थिंक उर्दू में फसलें कहते हैं, मेरा फार्म है, से एक बहुत बड़ा, like I grow crops on it, and then like say a weather event happened, तो like half my field, half of मेरी जो खेतें होती हैं, I think वो मतलब गायब हो गई, for example. Fields. Yeah. Fields. Yeah, well, like they're gone. And then sorry, give me a sec. I'll reshare. We have a question from Mohsin as well. Yeah, sure. You go ahead. I'll And just from Abdul Qadir. So you're going to take these questions now or in QA session? Yeah, I'll just finish my thought one sec really quick. Yeah, please go ahead. So yeah, so we did so उन्होंने एक AI बनाया that helps with like crop insurance claims कि मतलब मैं एक farmer हूँ, मेरा कोई farm में मसला आया, I'll like phone up my insurance company के साथ मैंने insurance ली थी, फिर वो ना पूरा आपसे सवाल जवाब पूछते हैं कि भी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने आपके crops गए, etc. तो उन्होंने AI agent बनाया जो आपका खुद insurance data भी मतलब आपका claim data भी लेता है, और खुद बैकग्राउंड में इट विल देन गो एंड इंटरेक्ट विद सैटेलाइट इमेजरी लेगा आपके फार्म की, विल डू रन ए मेटा एनालिसिस कि मतलब पिछले 1 घंटे में क्या इवेंट्स हुए, अभी आपकी क्या मतलब आपकी स्टेट ऊपर से देखेगा स्पेस से लिटरली आपके फार्म को, एंड इट विल जनरेट अ रिपोर्ट कि आगे जाके जो भी मतलब आपका एजेंट होगा, जो असल इंसान जो आके चेक करेगा आपका इंश्योरेंस क्लेम, he'll have a report. So that's like one example of like how AI agents can simplify that whole thing. कि जहाँ पे एक इंसान आता शुरू से आपकी देखता, आपकी farm को देखता, evaluate करता, like we can just use an invoke an AI agent that uses satellite imagery to generate like do analysis. तो ये एक example है. Airlines हो गई, बहुत सारी चीजें, dealerships etc. So agents, they think continuously, they can sense a pattern, they can quote unquote think, they can act and they can learn in a loop, adopting behaviors that are based on outcomes. For example, like airlines, if लोग मुझे 5-star rating देते हैं मेरे customer service representatives के लिए, like I know my agent is doing good work. Now we'll get on to another thing, but before we focus on okay, what are some of the reasons why AI adoption fails, let me take some questions. Okay, so there is a question by Abdul Qadir. So hi Ryan, a lot of companies assume their data is ready for AI just because they have a data warehouse or BI dashboards. In your experience, what is the specific technical gap between data that is good for reporting and data that is actually good for AI? We need a total architecture overall, or can we build on what we have? That is a very good question. That is what a lot of business owners struggle with. कि भाई अब अच्छा मेरी कंपनी है 100 लोगों की, अब मेरे पास बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, हाउ आई डू ऑपरेशंस, मेरे रोड ब्लॉक्स क्या हैं, व्हाट आर माय बॉटलनेक्स, कहाँ पे मतलब मेरा सबसे ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है या बहुत टाइम चाहिए होता है. मैं एक अगेन एयरलाइंस हूँ, तो मी एज एन एयरलाइंस मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जो जाता है कस्टमर सर्विस में जाता है कि भाई लोगों की मदद करना टिकट खरीदने के बाद, फॉर एग्जाम्पल. So yeah, so to answer your question, I'll answer that. I'll hold on to that question. That's a very good one. I'll just talk about what I have. One of the things I talk about is the data quality, and then we'll revisit this. We have another question from Mohammed Mohsin, which is what areas of AI initiative do you think will see real profitable adoption in the next 2 to 3 years? Right now, the ones that we've seen a lot of adoption in is customer service, as is outright the biggest case study is Air India. Like 97% of their customer agents are now replaced with AI agents. So they operate on 3% of AI agent, which is like unimaginable to believe. क्या मतलब आपके 1000 लोग थे पहले, now there's like you shrink it down to like 3%, which is like what 30, I think, or I think so. I mean math चल रही है. So yeah, so customer support is one very big. The second one where AI agents have a lot of potential in the next year is in doing any type of like complex, what do you call it? Complex processing, जैसे insurance में होगी कि मतलब insurance claim file कर रहे हैं. A lot of insurance companies, I know, because I was looking into this like a couple of weeks ago, a lot of insurance companies are now using this, and then a lot of companies that do a lot of reporting. Okay, for example, मैं एक hedge fund हूँ, like I'm like say a very very high scale like a venture fund. मतलब हम लोग we're a team of venture capitalists, so we do a lot of like investments
into like private equity, into companies, मतलब companies में जो लोग investors होते हैं basically, simple language. They're now using a lot of AI tools अपना risk assessment के लिए for like compiling their financial reports, etc. So to answer your question, like basically across every single industry, we're seeing profitable adoption. Kin initiatives में specifically, anything that interacts with your customers, anything that's conversational, कोई भी customer support bot हो गया, आपकी receptionist हो गई, इन चीज़ की बहुत ज़्यादा demand है. Anything that does any type of analysis, किसी भी डेटा के ऊपर और वो आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. बेशक वो इन्वेस्टर डेटा हो, इंश्योरेंस का डेटा हो, लाइक एनीथिंग कि आपका एक एजेंट जाए, आपके सिनेरियो को समझे, आपका पुराना डेटा ले और एक रिपोर्ट दे दे कि भाई ये चीज़ इतनी मैच होती है उससे. इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. एक और चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है विच इज़ विद इन लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इटसेल्फ, लाइक विद कोडिंग, जो लोग बनाते हैं एआई एजेंट्स, उनकी डिमांड है कि अब एआई एजेंट्स आ गए हैं जो आपको एआई एजेंट्स बनाने में मदद करते हैं. So that's a very big demand as well, and this is something that will continue to grow. Rehan, Yes, may those I are. interject here? Yeah, sure. Yeah. So I know you would want to answer a lot of these questions at the end. However, so I was working for the company that I was working for previously, was heading the commercial department, and because the CEO was outside of Pakistan, I mean there was dotted line reporting of the tech team as well. But the problem that the CEO and I had in running the company was after these LLMs was that we could figure out that a lot of coding was being done uh, by these LLMs. The software developer would not tell us that he's used ChatGPT for his code. So at times the quality of the code did improve, but the overall productivity of the organization. So let's say they required X number of hours to finish a task. That did not actually improve, and that was a big problem. So, and we could obviously see that they're taking help, so it should ideally take them less time, but it was not really happening. I'm sure you've also experienced the same. Is there any way of taking care of that, so while the quality improves, the efficiency in terms of man hours used, that's essentially stayed the same? Yes, I think yes. So that's a very, very like good point, and a lot of organizations have that. I mean, I run a software company as well. I have a team of 4 engineers that work for me. I mean, I actually promote AI adoption. Like, hey, like खुद काम नहीं करना, खुद करवाना है, सिर्फ इंग्लिश लिखनी है कि मतलब बनाना क्या है. But I think yeah, so that's a two-way thing. That's also I think the quality of engineering talent. Okay, if you're engineers with using Copilot, like a lot of these engineering tools, अगर उसके साथ भी if they're taking the same amount of time, I think that's probably something wrong with the engineers. So probably you should rehire. So that's one. And then number two is also like इस मसले के लिए भी there's dedicated AI tools that would actually like give you reports on like actual AI usage. कि भाई आपकी कंपनी में अच्छा AI use कितना रहा है. Like for example, Microsoft. We'll talk about like the biggest enterprise कि Microsoft किस तरह manage करता है. Microsoft में, for example, all the engineers, they get basically like unlimited tokens to use like any type of AI model. Microsoft owns, I think, a good chunk of OpenAI as well. So we have like ownership in GPT and all these LLMs. So Microsoft actually promotes you to use, like they don't want you coding, like to do coding, especially in like software related stuff. The way they measure that is how much you're talking to the AI. And then यहाँ पे एक पूरी अलग से एक पूरी field आ जाती है, like what we call prompt engineering. You guys might have heard कि like मैं as a developer versus एक और बंदा, हम दोनों AI को कह तो सकते हैं कि भाई ये फलाना सॉफ्टवेयर बना दो. But me as a developer, I can like actually see things a long term, like if like in terms of reliability, scalability, etc. So I think to answer that question, what to do or what are some of the things that happen even after AI adoption, your kind of efficiency kind of stays the same, but your like productivity overall, or like productivity stays the same, but like your efficiency is still increasing. I think that's fundamentally comes down to a human issue, I think, because the whole point of where AI adoption helps, two things, sorry, a human thing, it's like the actual engineering talent. If your engineer can't really
build something faster with AI, like it kind of defeats the whole point. Like the whole point of AI adoption is like you don't need to do the laborious part, which is up me as a software engineer. I only need to think. Like I need to be the architect for my solution, and like I'll actually deploy my agents, my little agents, to actually like create the whole structure up. So I think one, it's like that. So like a fundamental talent problem, like that there's just not the right employees. And then number two is also reporting, is having the proper amount of like data collection कि भाई क्या क्या हम metrics measure कर रहे हैं, क्या हमारे लिए important है कि how fast we build something, क्या हमारे लिए important है कि or even though we built it फिर हमारा process क्या है उसको test करने के लिए. For example, at Microsoft, and like a lot of the big tech companies, you start with an idea, then you create some type of a prototype, you test it, get feedback, then you build the actual thing, and then you keep on testing it until it ships out to production. And then even when we deploy it out, it's deployed in stages. We'll start off with like the smallest blast radius, then to like say 10 more customers, then to 100 customers, etc. So fundamentally, I think to answer your question, what can we do? Just have better reporting, so you can make better choices. And number two, it just comes down to human talent, because at that point, like AI is not necessarily yet to blame. It's just your fundamental engineers are just not competent in that scene, which is okay, which probably is an indication that the organization, the engineers got training chahiye, like they need training into like how to actually extract productivity, like engineering productivity from AI. So just data collection, and then just probably rehire at that point if engineers are not like, even despite having co-pilots, not boosting up productivity. So I hope that answers. I know that was a very long answer. I hope that answers that. Okay. Coming back to this, and I know my book which questions there in terms of, and I hope this will answer a lot of the previously asked questions, is like, what are some of those reasons why those why that AI adoption falls? Like one with this like software scenario that you asked about, like why it kind of it wouldn't necessarily, I would say, fail, but it didn't give its full potential in this like engineering scenario कि आप एक software house हैं, you're a software company, आपके the engineers use कर रहे हैं AI generated code, लेकिन फिर भी उनको वही time लग रहा है. Like why is that? Like that, this specific scenario, that's a human problem, not an AI problem. But we're going to talk about like when you actually have AI related problems in companies. So there's like these 5 different bands. The most common one, and this is all this data is compiled based on a survey that was done of 1,000 companies in North America trying to adopt AI and what problems that they've seen. Like for example, जो पहले नहीं मैंने example दिया Air Canada, Chevrolet. Like these are the 5 main reasons: having poor data quality, not having clear basically objectives that you want to hit, having misaligned goals, lack of skills, and this is that human problem that you mentioned कि वो engineers मतलब AI यूज कर भी रहे हैं लेकिन वही 8 घंटे लग रहे हैं उनको चीज़ बनाने में जो पहले लग रहे थे बगैर AI के. Is that lack of skills? Is that fundamental human training? Like how do I actually extract the most out of it? Because if they're using GPT code, like GPT to generate code, like say like generates in 5 minutes, but then they're spending 2 hours like trying to fix that code that GPT generated just because they have no idea what just happened, that's a fundamental lack of skills. And that's like the 4th biggest reason why AI, and one of the biggest reasons why AI fails, is like the people actually that are using these tools, they don't have the proper training and education on how to actually use these tools. So a lot of like, for example, within software, like a lot of software houses of Ashkelna, there's a lot of like really awesome tools, and I'm a big fan of this, like Claude Code and Cursor. These are just name of like 2 different AI tools that help you create software faster. You tools to hand, but the people, they don't have the right training to actually extract the most out of it. That, and then also insufficient testing, sorry, not inefficient, which is like you deploy a solution, but then you don't really spend the time, you don't invest the energy into testing it. For example, customer service. As a company, I have a lot of like customer service scenarios. I deploy an AI agent to help like do that faster. I don't invest the time in like actually testing everything through कि भाई हर क्या क्या सवाल possible सवाल है जो customer पूछ सकता है. मैं एक airline हूँ, मेरा customer support bot है. बंदे ने मुझे कॉल की मेरे एयरलाइन नंबर पे, अब वो मुझसे पूछा कि हाय आज
and then my AI just kind of breaks down. So that's like example of like that's a silly example, but that's an example of like insufficient testing as a business owner. So a lot of companies, what they do is like they jump into AI without really defining their problem. They want AI for AI's sake instead of actually solving some type of like quantifiable, measurable pain point. भाई मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मुझे पता है कि मेरा एवरेज कस्टमर सर्विस सपोर्ट टाइम है लाइक से आई डोंट नो 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट लगते हैं एक बंदे को एक सवाल पूछने में कि मेरी वेबसाइट पर जाए, अपना सवाल लिखे, चैटबॉट आएगा या ह्यूमन एजेंट आएगा, मतलब वो पूरी चीज़ 10 मिनट्स लगते हैं. This is something I can measure. This is quantifiable. I have good data. Like I have data that I can measure this. I want to bring the 10 minutes down to like say 2 minutes. कि भाई मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी में कोई भी मेरा कस्टमर आए उसको 2 मिनट के अंदर अपना सवाल का जवाब मिल जाए. Like say me as a CEO, that's my objective. So that's something I can actively use these metrics to measure my success rate of whatever AI implementation I'm doing. कहाँ पे ये मसला करता है कि भाई मेरी कंपनी चल रही है, अब मुझे बस चल रही है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बस AI डालना है अंदर. I don't know what that means. पता नहीं क्या, बस AI integrate करना है. And that's one of the reasons, like people who have that type of mindset, they see a lot of failures with AI because they don't have a clear problem. उनको पता नहीं है हल क्या कर रहे हैं, बस उनको बस चाहिए AI integrated चाहिए. Like they just want AI integrated somewhere. So start with a And clear. at this point, I have a question, Ryan. That what does AI readiness mean? Having beyond having data and tools. If we have tools, data, what does it mean to be ready for AI? AI ready means के understanding what type of tools there are. Because as a business owner, आपके ना कुछ चीजें that you do, whether it's like talking to people, interacting, creating contract, whatever, कोई भी आप business है, even a brick and mortar business, कि मतलब like it's an in-person business है, आप एक दुकान है, आप एक invoices बनाते हैं हाथ से, like whatever, there's work that you do. AI being AI ready, what that means is two things. One, अंडरस्टैंडिंग, समझना, खुद को अपने आप को एजुकेट करना कि भाई क्या क्या पॉसिबल टूल्स हैं वहाँ पे. जब आपको ये चीज़ पता चलती है, फिर जब आपको कोई मसला आता है, पहले मसला आना इंपॉर्टेंट है. यही मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि लोग भाई ये AI टूल है, चलो भाई इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं. ये गलत सवाल है पूछने के लिए फॉर बिजनेस ओनर्स. उल्टा होना चाहिए कि भाई मुझे ये मसला है, अब बताओ कि क्या क्या टूल्स हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं. ये नहीं कि भाई देखो मैंने ये ढूंढा है, ये एक नया टूल है, चलो कोई तरीका देखते हैं इसको इस्तेमाल करने के. That's not really the right thing to do. So yeah, so being AI ready means one, having an understanding कि क्या क्या tools हैं वहाँ पे, कि जब when you have a problem you can easily identify. AI ready का ये मतलब नहीं है कि मेरे business में कहीं ना कहीं AI बस डालना है अंदर. Like that doesn't mean that you're like quote unquote AI ready. It just means like आप AI forcefully fit करना चाह रहे हैं within your workflow. But yeah, so understanding what tools there are, and number two, AI ready means you actually have that open-mindedness, that skill of actually like delegating a part of your business, a part of that whatever your workflow is, to an AI agent. और इस चीज़ के लिए अब आपके पास कंपनीज हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है रेटेक. अब हम आपको उसमें कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत है, हम आपको AI रिसेप्शनिस्ट आपके सिनेरियो के लिए आपको कुछ परवाह नहीं है, आपको सिर्फ हमें फ़ोन नंबर देना है और बताना है कि जब बंदा ये सवाल पूछे क्या जवाब होगा, हम आपको हर चीज़ सेटअप करके दे देंगे. Like that's a solution that we provide. And then you as a business owner, like how you can be quote unquote AI ready is by having that open mindset, that knowing that AI receptionist hai duniya mein, and then number two, being open to actually adopting that. But that's my definition of what that means. It's having an awareness of tools and that open mindedness as a business owner to actually adopt those tools. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, thank you for that question. And then yeah, I'll come back to this, and I'll like the one of the main reasons, and then this will answer the question that was asked previously. Okay, another really like the most important thing that determines your success rate within like the world of AI is actual data quality. Is the biggest problem right now that all companies across the board, organizations, corporations, all the way to like say companies to 2 लोगों की हैं, 5 लोगों की हैं, 10 लोगों की हैं, that they have is having poor data quality. What this is, मतलब, for example, me as a company, like say I run, like I have like say Microsoft. Microsoft has close to 400,000 employees. 4 lakh log kaam karte hain. This is across the board, like engineers, product managers, HR,
customer support, sales, marketing, सबको मिला के. And now me as a business owner, I'm measuring some different, I'm gathering some different data. Like for example, मैं Microsoft का CEO हूँ. अब मेरे पास data gather हो रहा है कि मतलब मेरे employees कब छुट्टियाँ लेते हैं, for example. Okay. कि भाई क्रिसमस टाइम आता है, कौन कितने लोग मैटरनिटी लीव पे जा रहे हैं, लाइक फॉर पेरेंटल लीव. सो आई कैन मेक बेटर इंजीनियरिंग डिसीजंस कि भाई अच्छा इस टाइम में मेरे पास इंजीनियरिंग कैपेसिटी चल जाती है, लाइक जनरल ट्रेंड कि साल खत्म हो रहा है न्यू ईयर्स पे, या फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग समर ब्रेक आई नो दैट आई हैव लाइक लेस इंजीनियर्स टू वर्क विद, तो मैं मोस्ट लाइकली नए प्रोजेक्ट उस टाइम पे नहीं स्टार्ट करूंगा. लाइक दैट्स अ डेटा ड्रिवन डिसीजन आई एम मेकिंग कॉन्शियसली. कि भाई अच्छा मुझे पता है कि भाई साल के एंड में आधी तो मेरी वर्कफोर्स गायब हो जाती है, तो ये अच्छा टाइम नहीं है. बिकॉज आधी वर्कफोर्स गायब हो जाती है, ये अच्छा टाइम नहीं है कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए. तो अब माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, एंड लाइक ऑल अदर बिग कंपनीज, दे इम्प्लीमेंट समथिंग कॉल्ड अ कोड फ्रीज. अ कोड फ्रीज बेसिकली मीन्स कि जैसे अब कोई भी आप छुट्टियों के करीब आ रहे होते हैं, लाइक समर ब्रेक और विंटर ब्रेक, आप हम लोग मतलब एज लाइक इंजीनियर्स यू आर वर्किंग ऑन न्यू फीचर्स, आप मतलब नई चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो कभी लॉन्च नहीं होती, वो होती हैं अगले साल, लाइक आफ्टर 6 months when everyone's back. Like this is one example of like having like creating a schedule, like an engineering decision based on data. Like this is a very like one executive level example. And this is very efficient, very efficient. Yeah. So this way like you मतलब अब मेरे पास 100 लोग हैं टोटल, अब मैं 50 लोगों से जो काम करवा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा इंतजार कर लूँ, जब मेरे पास ज़्यादा आ जाए 100 से करीब, I can probably do that thing faster. So that's one example. अच्छा, to even get to this point, how poor data is solved is by actual data collection. अब इसके भी AI agents हैं जो आपके लिए data actually collect करेंगे and they compile it into like meaningful, like they extract insights. अब मैं अपनी कंपनी में डेटा लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड अर्लियर, कि लाइक आई रन अ सॉफ्टवेयर हाउस. Now I need to know like we have a task, what's an estimate, मेरा इंजीनियर्स का क्या एस्टिमेट देता है, और फिर एक्चुअल आवर्स क्या हैं जिस पे लगते हैं, और फिर जो आवर्स लग रहे हैं उसमें इवन विदर वी कैन गो इवन फर्दर. वी कैन इम्प्लीमेंट लाइक अ रिपोर्टिंग सिस्टम. अब वो खुद सेल्फ रिपोर्टेड हो या जो भी ऑटोमेटिक व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर, बट वी कैन इम्प्लीमेंट अनदर सिस्टम कि भाई जो मेरा इंजीनियर 8 घंटे गुजार रहा है एक ऐप बनाने में या एक वेब पेज बनाने में, उसका टाइम उसके अंदर क्या गुजर रहा है, मतलब उसका टाइम गुजर रहा है, अगर उसको 10 मिनट लगते हैं जीपीटी से जनरेट करने के लिए कोड, is he then actually spending the time like debugging that code? Is he spending that time like trying to generate it again? Like you can even go down as a business owner. So the way you solve data quality is by actually producing more data, not of the same type, but of like even like specific types. And then we'll revisit that, but I want to park that conversation because we can talk about data quality for long. But the way you solve for poor data is by breaking whatever your data collection is, with ramping up your data collection, actually collecting more data, and number two, going down into like specific smaller chunks. Point number three, why AI fails is fails is because, excuse me, organizations, like a lot of companies, lack AI ready talent, with 75% of their workers not being properly educated. What that means is and something like this is a fantastic initiative. आपकी कंपनी में लोग तो हैं, लेकिन जैसे आपने सवाल पूछा कि AI readiness क्या होता है, वो होती है नंबर 1 एजुकेशन, कि जब आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, you can't really do, you're just disconnected. So number thing for companies is investment around AI education, कि भाई क्या क्या टूल्स हैं हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए, कि भाई अच्छा अब ये एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है जो हमें रिसेप्शनिस्ट दे रहा है, ये नया सॉफ्टवेयर आ रहा है जो हमारे लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, मैं एक मार्केटिंग टीम चलाता हूँ, सो आई नीड समथिंग टू लाइक एक्चुअली promote my company. I can AI agents आ गए हैं that will automatically generate content for you. So मैंने सिर्फ उसमें अपना लिटरली इंस्टाग्राम आईडी डालनी है, एक दो प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं, वो खुद ग्राफिक्स बनाएगा, खुद लगाएगा, कोई मुझे ग्राफिक डिजाइन की जरूरत नहीं है, नथिंग लाइक दैट, पोस्ट भी करता रहेगा, कमेंट भी देता रहेगा, एक्सेट्रा. सो लाइक जब तक आपको पता ही नहीं है ये है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते. लाइक यू नीड टू नो what's out there. So proper education is one of the reasons why AI fails actually, because you don't know the whole breadth of what's out there. So you're working with limited tools, with a limited perspective. Number three, again, projects are launched without having proper testing, safeguards, leading to public failures. ये वो example था वो Chevrolet का, where Chevrolet के chatbot ने $1 का contract बना दिया lease agreement. अभी ये आपकी गाड़ी है. अब इसमें क्या पता चलता है कि one, their AI implementation was very rushed.
कि भी बस AI इस्तेमाल करना है, but जल्द से जल्द डालो without proper testing, without having safeguards. So that's another one of the big reasons why AI adoption fails. And then also, and this is I think probably the most important, is leadership. The actual decision makers, they having two problems. Ek, unki unrealistic expectation, like they not understanding what's happening, and number two, they themselves not being aware of what's actually out there. So I think it's very, very important for executives, for leaderships, and this is across the board. Like you don't have to be a CEO of like a 10,000 employee company. You're a CEO, like in a decision making position, like say in a 100 people company, 50 people company. You as a decision maker, it is very, very, very important that you understand what's out there in terms of AI tools and having realistic expectations. So that's also another reason why like AI just outright fails. कि भाई आपका CEO कह रहा है कि नहीं, भी इसको बनाओ, इसको करना है, हो नहीं सकता वो, but नहीं करना है इसको जबरदस्ती. So that's one of the reasons. And then also number two, to build on top of that, a lot of AI adoption, a lot of the problems that people have in companies, or let's reframe it, a lot of the work that companies are trying to optimize is not for technology, it's for the people. Iska kya matlab कि like people that you have within an organization, like here are some of the stats from recent surveys, that half of the people from some of the biggest companies here in North America, they're more concerned about AI. उनको डर लगता है artificial intelligence से versus them being excited. 70% of the people think that a lot of the challenges are with people. Just learning, आपने engineer का example दिया कि भाई my engineers are using GPT to generate code, but फिर भी like productivity is roughly the same. Like that's a people problem, not an AI problem. And Okay, only 35. Ryan, so sorry to cut you off, but I didn't want to because I was enjoying this conversation and we Yeah. are left with only 5 minutes now, so let's wrap it up. Okay, sounds good. Thank you for giving me the time notice. And thank I you. totally didn't notice the time. Because of the I'll time difference. Yeah, it's time yeah, zone. we'll quickly wrap up. So less people get education in terms of AI. What this is an indication of, this just tells you that we have to, as an organization, as business leaders, doesn't matter अगर आपकी 3 लोगों की भी team है, you have to develop confidence. You have to embrace that culture and create that culture in your team of being open-minded to new type of technology. I'll just quickly like speed run through this. How do you actually succeed? Again, having very precise, measurable outcomes. जितने आप specific data points collect कर सकते हैं, the better for your business. Identifying again what are some of your roadblocks, repetitive tasks. AI को AI के लिए इस्तेमाल नहीं करना. पहले मसला आएगा, फिर उसके बाद आपने देखना है इस मसले को क्या AI tool help कर सकता है. मसला पहले आना चाहिए. Not just because we want to use AI. And again, start small, do a lot of testing. Your leadership, do training for employees, help them learn about AI tools, etc. That's how you win with AI. I'll have so much to say more, but I wish I had more time. Some takeaways, again, a lot of AI initiatives fail, but you can learn from their mistakes. We have a lot of case studies. AI agents can help you significantly in your workflows, but then it's very important that you plan properly, you learn about what they are. And for everyone who's here, I have like a couple action items for you. Doesn't matter if you're a solo entrepreneur, a big business owner, a leader of a team. Start with like a problem in your work that you're seeing. Then invest your time, invest your team's time into looking into what tools are available to solve that problem. And then just look into like how you can deploy solutions, test, monitor progress, etc., and collect real world feedback. And hopefully you'll be successful with AI. Here are some of the links if people want. I can share the deck as well if you want everything that was mentioned. So that's it from my side for this one. And if anyone has any questions. Yeah, it was very, meaningful, insightful, and I was enjoying it thoroughly. So yeah, what we have, covered today is from why most of the AI initiatives fail, to the organizational blind that cause it, and the practical steps that we can take, data quality, and execution. So yeah, it was very meaningful, and thank you so much, Ryan. I have one question for you. It's not very relevant to the topic, but yes, I really wanted you to, answer this question. That what motivated you to be the youngest software engineer and working for Microsoft?
in just when you were just 16 or 17 years old. Yes, I got So hired. I started in tech when I what was 7 years old. what was the Uh, motivation? for me, for starting, the motivation was honestly just building stuff. I just loved building stuff. So Mm-hmm. जब मैं छोटा था, like I started even earlier in tech. So from the age of 7, I've been building software, like छोटी small apps, small games. Okay. My main thing was to be technology is something like software, especially softwares, like the software side. Software is something that I can think of an idea and like I'm in control. Like I can actually build it out. Like I want to build a game, मुझे game बनानी है जिसमें Mm-hmm. ये हो. मैंने Call of Duty बहुत खेलता था, लेकिन उसमें कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं थी. मैंने अपनी खुद Mm-hmm. गेम बना दी Call of Duty की तरह. Okay. वो Okay. चीजें डाल के that I liked. So that was the thing I absolutely loved, is like being in control, creating something from scratch and actually seeing it visually. Mm-hmm. That, and then also number two, I love like running businesses. I love just like working with like managing people, creating Mm-hmm. something, like being a CEO. Mm-hmm. Like that's literally when I was a kid, like that was one of my goals. So I thought, okay, like tech, आप ये करते रहो, like you can like actually create your company one day, etc. So yeah, just Mm-hmm. that those interests, and it was less interest, honestly. There was no passion about technology or anything when I started. It just happened to be something that I did as a hobby, and then just never gave up on it. Like जब मैं 7 साल का था, I used to create software as a hobby, and then literally up like at 21, I still do that. And Cool. now Cool. obviously like जब आप साल गुजारते हैं, you develop some type of competency. And when I was 13, I got my first 2 world records, becoming the youngest Android developer in the world, the youngest Mm-hmm. Udacity nano degree graduate. When I was 14, finished high school. 15, youngest university student here in Canada. At 16, got hired by Microsoft. ये सब कुछ हुआ after you develop competency. वो किस तरह आई? After So spending we have this is the last minute. So I will again have to cut you off. sure. And thank you so much, Ryan, for your time, for sharing your insights, for sharing your experiences, for educating us, and for motivating us. And thank you to everyone who joined us today. Thank you for your time. Thank you for joining us. And be ready for the episode 2 of this webinar. We are definitely going to have one more because this wasn't enough. Remember जब हम प्लान कर रहे थे तो we were discussing over कि क्या one hour is not enough, हम 2 कर लें या थोड़ा कम कर लेते हैं. So yeah, time का पता ही नहीं चला आज. Yeah, no, sounds good. I had a blast as well. So thank you guys for hosting Thank me. you. Thank you so much, everyone. Thank you. Okay. Take care. Allah Hafiz.